Hello students, today's topic I'll explain you about the endocrine glands. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए या 12th क्लास के लिए भी है. ठीक है, पूरे बोर्ड के लिए सीबीएसई आईसीएसई और एसएससी. ठीक है ना. तो आज एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. एक्सोक्राइन ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट एक्सोक्राइन enzymes, especially if you talk about enzymes, digestive system like that, exocrine system. Endocrine system is a little bit different. Okay, we'll study about the endocrine glands here. Clear? Clear? Endocrine glands, if you're studying briefly about the endocrine glands, that means you're studying about the one big branch of a science. Okay, and branch is called as the endocrinology. Clear? Endocrinology. Clear? And the person who has given the brief theory about this, his name is Thomas Edison. Thomas Edison. He has given the brief theory about the endocrine glands. These endocrine glands are called as the ductless glands. What they call as ductless glands. Endocrine glands. Endocrine glands are said to be as a ductless glands. Ductless. What is ductless? Duct means tube. Okay, duct means here tube. So this glands doesn't have a tubes. Clear? Like exocrine glands, they have the tubes. So they release their enzyme, okay, in particular area in our body. Okay, but whereas the endocrine glands, they don't have the tubes, they don't have the duct, so they are ductile glands. They release hormones directly into the blood. Clear? Directly into the blood. If the exocrine glands are there, they release the enzymes. Okay, difference. Exocrine glands release the enzyme, endocrine glands release the hormones. So here we'll study about the hormones, mainly about the hormones. Clear? Endocrine glands totally linked with the hormones. Clear? What is hormones means? Hormones otherwise called as chemical messengers. What are the hormones otherwise called as here? Chemical messengers. Chemical messengers. Chemical messenger or autocoids also can tell. Hormones otherwise called as autocoids. हार्मोन के दो नेम है, केमिकल मैसेंजर बोल सकते हैं या फिर उसको ऑटोकॉइड्स बोल सकते हैं. ठीक है. हार्मोन बहुत ही लिटिल क्वांटिटी पे एक्ट करता है सेल पे या टिश्यू पे या ऑर्गन, लेकिन वो ऑर्गन या टिश्यू का फंक्शन और स्ट्रक्चर पूरा चेंज करता है. ओके, लिटिल अमाउंट ऑफ हार्मोन इफ इट एक्ट ऑन द एनी टिश्यू or a organ, it totally change the structure and function of the tissue or the organ. Clear? So here one answer is a 2-mark answer. What is target tissue? Okay, target tissues organs are nothing but on which hormones act. Okay, suppose this is the tissue. This is the tissue. Now this is the hormone. Can you see the hormone here now? Very minute one. बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा. ठीक है. If it enter into this tissue or organ, it can change its structure. It can change its structure and function. ये सारे से change करेगा. Okay, that much powerful the hormone is. Okay, the hormone is very powerful. बहुत powerful रहता है hormones. Clear? So it is called autocoids or chemical messengers. It's a type of a chemical. Okay, which can change the structure and function of the tissue or the organ. So a tissue or the organ on which the hormones act. Okay, on which the hormones acts is called target tissue. Target tissue or target organ. Clear? 2-mark answer. What is the target tissue? Okay, a tissue or a organ on which the hormones act, okay, is said to be as a target tissue or the target organ. Okay, so hormone, maybe it is a very tiny one, very small in structure, it enter into tissue or the organ, but it can bring the big change. Okay, big change in the cell, tissues and organs. Clear? Still deeply will go now. This is about the hormones.
Exocrine gland means enzymes. It works on the enzymes here. Clear? Now, what are the important endocrine glands? The first important endocrine gland is pituitary gland. Pituitary gland. This is the first one. Clear? And the second one, thyroid gland. Thyroid gland. Okay. And next one is parathyroid gland. Parathyroid gland. Parathyroid gland. Clear? And fourth one is adrenal gland. Adrenal gland. Clear? And fifth one is pancreas. Clear? Fifth one is pancreas. And the sixth one is ovaries. Ovaries. And the seventh one is testes. Testes. Okay. Ovary and testes together called as gonads. A name is given to it as a gonads. Clear? Clear, understood? These are the other still glands are there. Okay, but out of that all the glands, these glands are a very very important one, very essential one. और भी glands बाकी है, और भी है glands, लेकिन वो सारे glands में ये glands बहुत important है. इनका function, इनके काम करने का तरीका, everything is very very essential, very very important, बहुत important है. ये सारे glands, एक एक gland complete. अब एक एक gland के बारे में हम complete brief structure पढ़ेंगे, ठीक है? Totally brief, which carries 6 marks. If you write only definitions or about a short notes also you can write for 4 marks and long answer for 6 marks. ठीक है? So एक एक gland के बारे में पढ़ेंगे. Clear? What are the important and essential glands in human body? They are pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, pancreas, ovaries, testes. Ovaries and testes, okay, together called as the gonads. Clear? Now one by one we'll study about this glands. Clear? First one, pituitary gland. Okay, pituitary gland. This pituitary gland, okay, weight of the pituitary gland, first point, weight of the pituitary gland is 0.5 gram. Okay, and size about a large pea seed. Large pea seed. Yeah, this is the most important point, first one. Okay, pituitary gland, okay, the weight of the pituitary gland is 0.5 gram, very very small. And a large pea seed, okay, large pea seed, I think this much big. इतना बड़ा रहेगा, इतना रहेगा बस, ठीक है? इतना सा छोटा ही है, पी सेट तो छोटा ही रहता ना. क्लियर? सो द वेट कितना है? 0.5 ग्राम. द वेट इज 0.5 ग्राम. एंड व्हाट द साइज हियर? लार्ज पी सीरियल. नेक्स्ट, this pituitary gland, okay, it is attached to the brain, underside of the brain. So this is the brain, the structure of brain. Here it is attached, in this area it is attached, okay, with the help of one small stack. छोटा स्टैक लगा हुआ रहता है उस वहां पे, ये ऐसा अटैच रहता है. इट विल बी अटैच लाइक दिस. ओके, अंडर साइड और द बेस ऑफ द ब्रेन यू कैन टेल. ओके, ब्रेन के बेस में अटैच रहता है एक स्टैक के थ्रू. एक स्टैक उसको लगा हुआ रहता है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड. क्लियर? दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. क्लियर? अंडरस्टूड? यू नो, so where it is present, you know, base of the brain, this area, the base of the brain, here one area, this region is called hypothalamic region. hypothalamic region. Clear? Region का मतलब space. ये space का क्या नाम दिया? Hypothalamic region. The region where this pituitary gland is attached, that region is called as the hypothalamic region. Because it is attached in that region, the pituitary gland also called as hypothalamic gland.
the other name also given to pituitary gland, because of it is attached to that area, to that region, okay, underside of the brain. That region is said to be as a hypothalamus. So because it's attached to the hypothalamus, the gland also called as the hypothalamic gland. This is the region, and this pituitary gland have three lobes. It have three lobes. Clear? The first one is called as the anterior lobe, intermediate lobe, okay, and next one is the posterior lobe. Clear? These are the lobes. Lobes किसको बोलते हैं? Compartment को बोलते हैं, हिस्से, compartment, chambers. Clear? So pituitary gland have how many chambers? Three chambers, three compartments, three lobes. Clear? सबसे बाहर वाला लोब को क्या बोलेंगे? Anterior lobe. यानी बाहर वाले के लोब को क्या नाम बोलेंगे? Anterior. Middle, intermediate. सबसे अंदर वाला जो है उसको क्या बोलेंगे? Posterior lobe. So these are the three lobes: anterior lobe, intermediate lobe, and posterior lobe. All the lobes, the work of these all lobes is to produce hormones. Different hormones. Okay, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ये एरिया में. ओके, थ्री लोब्स में. ये लोब्स का काम ही वह है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना. Clear? What is the work of these lobes? To produce the hormones. These hormones, pituitary gland is here, this side, it is present in this area. In this area, it is present. Hypothalamic region here. Hormones are produced here. Pituitary hormones are producing here, but it can act any part of our body. Clear? Any part of our body, the hormones can act. Clear? And I already told you, if the hormone is act on any tissue or any organ, and that organ or the tissue is called as a target tissue or target organ. Clear? Because it can bring a big change when it act on any tissue or any organ here. Clear? Understood? Pituitary glands, how many lobes are there? How many chambers are there? Three are there: anterior, intermediate, posterior. What is the work of these lobes here? To produce hormones. क्या work करें यहाँ पे? Hormones. कौन से hormones? Which hormones it is produced? Many hormones are there. Out of that, first hormone is called growth hormone. Growth hormone. Okay. Second one, vasopressin. Clear? And next, prolactin. Okay, prolactin. Okay. Then fourth, oxytocin. Okay. And fifth, TSH, thyroid stimulating hormone. TSH का मतलब क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एक्सेट्रा. और भी हार्मोन्स हैं. ओके, स्टिल मेनी हार्मोन्स आर देयर. If this question comes for the 6 marks, long answers, essay type question, then you can explain any two hormones from this. Out of it have nearly 7 to 10 हार्मोन्स आर देयर. 10 तक हार्मोन्स है इसके, ठीक है ना. तो 10 हार्मोन्स में से या 8 हार्मोन्स में से आप कोई भी दो हार्मोन ये बाकी के पॉइंट्स करके वो समझा दिए, you will get a perfect 6 marks. Clear? If it comes in 6 marks, you will get 6. If it comes for 4 marks, then you will get 4 marks. Full marks you will get. Okay, पहले तो उसका इंट्रोडक्शन लिखना. What is pituitary gland? Where it is situated? What is the weight of that? How many lobes are there? What is the work of lobes? Then start about the growth hormones. Clear? समझ में आ रहा हूँ मैं, ठीक है. तो अभी ये एक दो हार्मोन्स मैं इसमें से बता दूंगा, ठीक है. एग्जाम्पल लाइक ग्रोथ हार्मोन इज देयर. Now what is the work of growth hormone? Suppose if the growth hormone, okay, if the growth hormone, okay, if it is produced less than required amount, listen carefully, if the growth hormone produce less than required amount during childhood, the person will be dwarf. बौना बोलते हैं ना, बौना गिरते रहते थे लोग, 50 ईयर्स हो जाती है या 40 ईयर्स हो जाती है, लेकिन उनका हाइट नहीं बढ़ता, उतने ही हाइट के रहते लोग, बिल्कुल गिरते, बिल्कुल छोटे रहते, हाइट के रहते, उनको बौने बोलते, छोटे. उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ड्रॉफ. एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ड्रॉफिज्म. And the condition called as the dwarfism. दो मार्क का आंसर है. Okay, what are dwarfs? What are the work of a growth hormone? Clear? Once again, I'll explain. Listen carefully. If the growth hormone produce less than required amount, then the person will be dwarf. Clear? The person will be dwarf. Less than required amount, then they are called the dwarf. And the condition is called as the dwarfism. What is the condition called as? Dwarfism. Next condition, opposite to it. Suppose if the growth hormone produce more than sufficient amount, if the growth hormone
produce more than sufficient amount, then the person will be giant. Okay, लंबा tall, बहुत लंबा रहेगा, 7 फीट, 7.5 फीट लास्ट. Clear? Giant. Okay, lamba बहुत. And the condition is called as a gigantism. Okay, gigantism. Long, tall the condition. Clear? ये कब आ रहा condition? जब when the growth hormone produce more than required amount. जितना required है उससे ज़्यादा. अगर उससे ज़्यादा अगर उसका produce हो गया childhood में, तब क्या हो रहा? The person will be giant. These are the two conditions. Clear? And the person is called as a giant. क्लियर? अंडरस्टूड आई थिंक अबाउट द ग्रोथ हार्मोन. इतना लिखना है ग्रोथ हार्मोन के बारे में. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के बारे में क्या क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? व्हाट विल राइट इन द फर्स्ट पॉइंट? इफ द ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस less than required amount, the person will be dwarf and the condition called as a dwarfism. If the growth hormone produce more than sufficient amount, the person during childhood the person will be giant, and the condition is said to be as the gigantism. The condition. Next is the vasopressin is there, other hormone. All these hormone belong to pituitary gland. Pituitary gland is producing number of hormones. Okay. Now, what is the work of vasopressin? Suppose this, if the vasopressin is not produced sufficient amount in the body. Suppose अगर vasopressin body में sufficient पैदावार नहीं हुई, produce नहीं हुआ, then what happen here? The person, okay, he'll suffer with the disease, and the disease is called as a diabetes insipidus. Disease को क्या बोलेंगे? Disease का नाम क्या है? Diabetes insipidus. Insipidus. Clear? The person suffer with a disease called as a diabetes insipidus. कब होता है diabetes insipidus? जब के vasopressin hormone, okay, ये vasopressin hormone produce, okay, less, very less, if it is not produced at all, okay. Suppose the vasopressin, if it is not produced in the body or very less in the body, then the person suffer with the diabetes insipidus. ये होता क्या diabetes insipidus में? Okay, water urine जो आता है person को, nearly 15 liters of urine excrete होता. It's a very dangerous. It is not a common disease. Okay, it is not a common disease. Nearly 15 liters of urine will be excreted, okay, from that patient who's suffering with the diabetes insipidus. Actually, a healthy person releases only 1 to 1.5 liter of urine per day. But if the person is suffering with this disease, diabetes insipidus, then the 15 liters of urine per day. Okay, it is not a common disease, it's a dangerous one here. Okay, what is the disease name? Diabetes insipidus. कब हो रहा है? When vasopressin hormone is less than required amount. Okay, very less. Then this disease occurs, which is called diabetes insipidus. Clear? And another very, very, very important point about pituitary gland. Very important. Pituitary gland serve as a link between exocrine system and endocrine system. दोनों के बीच में लिंक करता है. कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड. Linkage between the exocrine gland, endocrine gland, and control many glands of our body. Many glands of our body, even though it is a very, very small, it can control many glands of our body, many functions of the body. So the name is given to pituitary gland as master gland of the body. Master gland. Clear? Pituitary gland is otherwise called as master gland of the body. Clear? Hope understood about this one. समझ में आ गया होगा पूरा completely. Clear? So these are the hormones. इतना सारा लिखिए तो 6 marks perfectly आ जाता. You'll get 6 marks. Clear? Pituitary gland के बारे में इतना समझा दिया तो पूरे points आ जाएंगे. Perfect 6 marks you'll get. These are the points. Nearly 10 points it will be. Okay, 8 to 10 points you can write it here. Clear? Next one then. See, pituitary gland is very, very, very small and weight about 0.5 gram, isn't it? बहुत छोटा है, 0.5 gram. फिर भी देखो पूरे body पे control कर रहा. It controls each and every other gland, isn't it here? Other glands in the body, other glands. Clear? So it is called as master gland of the body. Now the next one is the thyroid gland. The next one is thyroid gland. Thyroid gland. No, the weight of thyroid gland nearly 25 to 30 grams. ये इसका वेट है, थायराइड ग्लैंड का वेट. ठीक है, कितना वेट है? 25 to 30. ठीक है, ये इसका वेट है. ना thyroid gland produce a very important hormone here. Thyroid gland produce a hormone called as thyroxine.
this hormone is produced. Which hormone? Thyroxine. Thyroxine. Clear? The hormone produced by thyroid gland is called thyroxine. It is also called triiodothyroxine also. Okay, other name also given to it. Clear? What is the thyroxine otherwise called as here? Triiodothyroxine. That also can tell. And this thyroxine will do it four important work. Okay, four very important work here. The first work is about the increase of metabolism. It helps in increasing the metabolism. Metabolism. Okay, this is the first one. First one, increase the metabolism here. Next, second one, promotes the growth. It promotes. It promotes growth. Clear? Write these points. It will be very easy for you to write the answer, to frame the answer. Clear? You have to write the points then. Clear? Then third one, it easily what happened? It helps in the production. Okay, production of a heat in the body. Production of heat. Heat in the body. Clear? Understood now? Write the point wise. Clear? Next, it also help in differentiation. Differentiation of tissues. Clear? Understood? You know? Clear? What are the four important work it is doing? You know, the first one. What the first one is called? It helps in metabolism. Metabolism किसको बोलते हैं? What is metabolism? किसको बोलेंगे metabolism? कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, ओके, प्रोटीन्स है, कॉम्प्लेक्स रहते हो लोग, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाते, चेंज होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते, यही चीज को उसको मेटाबोलाइज करते हैं. ओके, जब एनर्जी बन जाती हो, इट मूव फ्रॉम सेल टू सेल, टिश्यू टू टिश्यू, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, द एनर्जी सप्लाई, दैट्स इट, द प्रोसेस सेट टू बी एज अ मेटाबॉलिज्म. Breaking down of complex molecule into simpler form and taking it from and giving to each and every tissues of our body, said to be as a metabolism. Clear? This is a metabolism. Second, promotes the growth. Growth of a child will be good. Growth of a child and the person also will be good here if quantity of thyroxine is good in the body. Okay, quantity of thyroxine should be there, perfect quantity, required quantity should be there. If it is there, growth, okay, promotes the growth. Okay, growth also can take place easily. Next, heat in the body. It maintains the heat in the body. We have the temperature 98.4 Fahrenheit temperature will be there in the body. It will be maintained properly. Okay, completely. उसको maintain करके रखता, temperature को body में maintain करके रखता. Last one, differentiation of tissues. Differentiation के indicate क्या है? Tissues development होता है. Okay, development. Suppose when you get any injuries, cuts or wounds, खिरोच वगैरह आ जाता है, कुछ कट आउट जाता था, कुछ दिन के अंदर उसमें ब्लैक सब्सटेंस ऊपर आ जाता, खिपली जिसको बोलते हैं ना, ऊपर आता, जॉइंट आता, बाई मीन्स ऑफ प्रोसेस, माइटोसिस मियोसिस पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे ना, माइटोसिस मियोसिस, इट जॉइन. Okay, so when it join here now, at that time the double, okay, divisions of cells and tissues are taking place here. Okay, that is called differentiation of tissues. Okay, development of tissues. Many areas, many part of your organs development can take place. So these are the main function of the thyroxine. Clear? Understood? You know? Main work of thyroxine. This all the things you have to write it here. Clear? Now suppose in condition, suppose if thyroxine is not produced. Clear? Understood? You know? Suppose if the thyroxine is, to other thing important I tell you, to produce a good quantity of thyroxine, what is needed? Iodine is needed. क्या जरूरत रहेंगे यहाँ पे? Iodine. Nearly 65% iodine is needed by the body. Clear? कितना percent of iodine रहना body में? 65% रहना. उससे कम ये थोड़ा बहुत ज़्यादा. Okay? इतना रहना. ये रहने की वजह से thyroxine हार्मोन अच्छे तरीके से प्रोड्यूस होता, thyroid gland. ठीक है? Good, it can develop, you know, ये iodine रहने की वजह से. And from where we are getting this iodine, you know, eggs are there, milk is there, curd is there. Okay, some leafy vegetables are there here. These are the source from where we can take the iodine. And the best source is the salt. नमक, iodized नमक बोल के लिखा हुआ रहता है, salt पड़े होंगे, iodized salt. Okay, already उसमें iodine present रहता है. और नमक के बगैर तो कोई चीज़ पकाते नहीं ना, करी में नमक रहता, rice में. Okay, everybody use the salt, you know. Clear? So sufficient amount of salt if you are taking, then iodine, you are getting the iodine then. Okay, iodine, and eggs are there, milk is there, this all the thing we are consuming daily. So daily we are getting this much amount of the iodine. So if this amount of iodine is there in the body, then the perfect amount of thyroxine also produce.
Clear? Suppose if it is not produced in thyroxine, then what happens? Then conditions are there here. What are the conditions? The growth will be slowed down. The growth, okay, the growth will be slowed down. Okay, growth जल्दी नहीं होती. Okay, slow होती, growth बहुत slow हो जाती है वैसे child में. Okay, if sufficient amount of thyroxine is not produced, clear, then that child will be suffering with a mentally retarded. Mentally retarded. मेंटली रिटार्डेड, ये दो कंडीशंस है. सपोज अगर थायरोक्सिन हार्मोन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हुआ बॉडी में, तब क्या होना, तब जो दो डिसीज होते हैं वो चाइल्ड में. एक तो ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता, उसकी ग्रोथ हाइट नहीं बढ़ेंगे, ग्रोथ नहीं होगा परफेक्टली. ठीक है. सेकंड, मेंटली रिटार्डेड, उसका मेंटल भी काम नहीं करता, ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करता, डेवलप नहीं होता. व्हाट इज योर फादर नेम, मदर नेम बोल देता है ना, मतलब जो चाहे कर सकता. क्लियर, ही विल नॉट बी स्टेबल at that point. Clear? कब कंडीशन आ रहा है वो, this mentally retarded when thyroxine amount will be less, if it is not produced okay in sufficient amount in the body, ये कंडीशन. तो ये दो कंडीशन का एक नाम दिए, क्या नाम है उसका, क्रेटिनिज्म. क्रेटिनिज्म. okay, the disease is called as a cretinism. Cretinism किसको बोलेंगे, the child who is suffering with the growth slowdown as well as the mentally retarded. The child will be mentally retarded. वैसे कंडीशन पे एक नाम उसको दे दिए और नेम इज गिवन टू इट एज ए क्रेटिनिज्म. क्लियर? दिस अबाउट द थायराइड ग्लैंड. क्लियर? अंडरस्टूड अबाउट थायराइड ग्लैंड. डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, देन सपोज थोड़े लोग नमक ज्यादा खाते, थोड़े लोग नमक कम खाते, थोड़े लोग इतना फीका खाते, बहुत फीका रहता, उनका करी भी फीका रहता, उनका राइस फीका रहता, एकदम फीका. वैसे खा जो लोग खा रहे हैं ना, वेजिटेबल्स भी कम खाते हो लोग. सुबह सुबह देखें ब्रेकफास्ट, स्पेशली स्टूडेंट्स, तुम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह सुबह कभी कभी दूध पी के आते या कभी खाते नहीं, वैसे ही आ जाते टिफिन लेके. अब टिफिन में क्या रहता, एक हाफ चपाती, 1 चपाती, उससे ज़्यादा खाते नहीं, है ना. वैसा अगर खाएंगे, इफ यू टेक सच टाइप ऑफ डाइट, योर डाइट शुड बी बैलेंस्ड डाइट. इन द फर्स्ट लेसन आई थिंक यू स्टडीड दिस वन, बैलेंस्ड डाइट. If it is a not balanced diet here, then definitely you'll get the diseases then. Clear? If you are taking the balanced diet, then good. So here what happens, if the person who is taking the very less amount of salt, or if he is not taking the egg, milk, then what happens, the iodine quantity will be reduced. Clear? ये iodine quantity अपने आप में reduce हो जाती, deficiency हो जाती, deficient हो जाता है iodine body में. At that time, that person also suffer. Okay, suffer with other disease called as simple goiter. The disease is called as a simple goiter. जो पर्सन में आयोडीन की कमी हो गई, अच्छा सुनो, जो इंसान या जो चाइल्ड जो आयोडीन कम अंदर ले रहा, ओके, थ्रू सोर्स क्या है, फूड है, कई सोर्स फूड बोला मैं, अभी सोर्सेस क्या है अभी बताया, बॉइल्ड एग, मिल्क, कर्ड, vegetables, these are all the sources here. If the child is not eating perfectly and balanced diet here, then such person is not getting a good quantity of iodine. If the iodine is not there, it directly affects on thyroxine. Okay, so anyhow, if the iodine quantity is very less, the child suffer with a disease called as simple goiter. Do you know what happens in simple goiter here? Actually, where is this thyroid gland will be there here? In trachea region, near the trachea. Now this is the trachea. ये हमारा trachea, ठीक है, ये area यहाँ पे trachea is in the neck. Okay, neck में रहता है, ठीक है ना, inside the neck. So here trachea, ये trachea को लग के रहता है ऐसा. It is just near the trachea. This is the thyroid gland. Clear? This is the thyroid. ये thyroid यहाँ पे trachea को लग के. Then suppose the person is not getting the iodine perfectly, then the disease called as simple goiter. Simple goiter में होता क्या? What happens in simple goiter here? This thyroid gland enlarge, ये फूलना शुरू होता, swallow, यहाँ neck region. तो ये neck इतना बड़ा हो जाता, ऐसा बड़ा, इतना बड़ा है. The disease is called as the simple goiter. Clear? Hope understood this one also. समझ में आ गया नहीं? जिसके जिस्म में, जिसके बॉडी में, okay, if the less amount of iodine is present, then the child or the person suffer with the disease called the simple goiter. What is simple goiter? Enlargement of a neck. Why enlargement of neck is taking place? Because the enlargement of thyroid gland is taking place inside the neck. Then it affects on the neck. Clear? These are the two. Cretinism, simple goiter. Cretinism because of thyroxine. Okay, because of thyroxine, mentally retarded, growth will be slowed down if the thyroxine quantity is not sufficient. Clear? Next one.
ये भी 6 मार्क का आंसर है ना, बड़ा आंसर है ये भी। The next one is called parathyroid gland. The next one, parathyroid gland. Parathyroid gland. ये next one, ठीक है ना, parathyroid gland. The weight of this parathyroid gland is about 30 gram. ठीक है, 30 ग्राम. Now where it will be here? This is our trachea. ये ट्रैकिया है, ठीक है. यहाँ पे क्या है, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड. इसको बिल्कुल बिल्कुल इसके करीब रहेगा, यहाँ पे रहेगा 2 पेयर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड. छोटा पिंक कलर में रहता, बिल्कुल छोटा, ग्रेन चावल के दाने के उतना रहता, थोड़ा बड़ा रहता, ठीक है. क्लियर. ये इसका वेट कितना रहेगा, 30 ग्राम्स रहेंगे पूरों को मिला के, 30 ग्राम्स रहेंगे. छोटे छोटे छोटे, बहुत छोटे, थोड़ा बढ़ के भी रहेंगे, 100 ग्राम तक भी आ सकता है, लेकिन छोटे छोटे रहेंगे ऐसे बॉल्स. यहाँ पे थायराइड ग्लैंड को अटैच करे हुए रहते हैं, ठीक है. व्हाट दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज, यू नो, पैराथायराइड ग्लैंड. नाउ दिस पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस ए हार्मोन. कौन सा हार्मोन, पैराथ्रोमोन. ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है. विच हार्मोन, यू नो, पैराथ्रोमोन. पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड एज पैराथ्रोमोन. अब ये पैराथ्रोमोन कंट्रोल क्या करता है, ओके, इसके भी वर्क है, अलग अलग वर्क है इसके, ठीक है, अलग डिफरेंट. जैसा कि अपन थायरोक्सिन के बारे में पढ़ेंगे अभी, ऐसे थायरोक्सिन के जैसे ही पैराथायराइड भी जो प्रोड्यूस करा, क्या प्रोड्यूस करा हमें, पैराथ्रोमोन. इसका भी वर्क है, क्या वर्क है यहाँ पे, इट कंट्रोल्स, पहला वर्क है इसका, इट कंट्रोल्स the levels of calcium and phosphate. क्लियर. क्या कर रहा है ना, इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ किसका कंट्रोल कर रहा है उसको, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, बोथ, ओके, इन ब्लड एंड बोन्स, दोनों में कंट्रोल करता है, इन ब्लड एंड बोन्स, ये दोनों में कंट्रोल करता है, ठीक है. ये पहला वर्क है उसका, ठीक है. पैराथ्रोमोन, व्हाट आर द मेन वर्क ऑफ पैराथ्रोमोन, यू नो, इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट in blood and bones. This is the first function of parathormone. Clear? Understood this one here. What is the work of this one? पैराथ्रोमोन का वर्क क्या है, यहाँ पे क्या कंट्रोल कर रहा है, उन्हें लेवल ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट, ये दोनों को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे. क्लियर. अंडरस्टूड, यू नो. एंड नेक्स्ट वन, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो अभी, ठीक है, बोन्स में. सपोज कंडीशन है, सपोज अगर ये हार्मोन, ये पैराथ्रोमोन हार्मोन, सपोज इन केस, ओके, इफ इट इज लेस क्वांटिटी, इफ इट इज प्रोड्यूस इन लेस क्वांटिटी, ओके, लेस क्वांटिटी, अगर लेस क्वांटिटी प्रोड्यूस हो गया बॉडी में, सपोज इफ द पैराथ्रोमोन हार्मोन प्रोड्यूस इन लेस क्वांटिटी, देन व्हाट हैपेंस, अगर ये बहुत कम में प्रोड्यूस हो गया बॉडी में, तो क्या होगा, देन व्हाट हैपन, यू नो, द बोन्स विल बिकम वेरी सॉफ्ट, ओके, सॉफ्ट बोन्स. क्लियर. If parathormone hormone produce less amount in the body, okay, then what happen, you know, the bones will become soft. Clear. Suppose especially for the students, you know, you have the habit of drinking the aerated drinks, thumbs up है, sprite है, red bull है, hell है, sting है, सारे hell, हर चीज जो भी गंदा ड्रिंक है वो पीने की आदत रहती है स्टूडेंट्स को. थोड़ा तो हैबिट बना लेते हैं, खाने बैठे तो कोल्ड ड्रिंक, बाहर कहीं जा रहे तो कोल्ड ड्रिंक, ओके, किसी से बात करते ठहरे तो कोल्ड ड्रिंक की आदत होगी वो लोग. थम्स अप है, पेप्सी है, हेल है, मॉन्स्टर है, ऐसे ड्रिंक्स. ये ड्रिंक्स डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द कैल्शियम. किस पे इफेक्ट करेंगे उन्हें, डायरेक्टली ये कैल्शियम पे इफेक्ट होता है, लेवल ऑफ कैल्शियम पे, ठीक है. व्हेन इट इफेक्ट ऑन द कैल्शियम, बोन्स इज कवर्ड विद द कैल्शियम एंड फॉस्फेट आल्सो, बट कैल्शियम इज मोर क्वांटिटी है. कैल्शियम जब हट गया बोन से, your bones will be very soft. So students, don't make a habit. Once in a blue moon you can take, no problem. Habit नहीं बताना, मैं भी पीता हूँ, लेकिन habit नहीं. Don't make a habit of this thumbs up, Pepsi,
हेल, स्टिंग, स्टिंग तो सबसे गंदा ड्रिंक है। ओके, एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं ना, स्टिंग है, रेड बुल है, हेल है, एक नाम दिया उसको एनर्जी ड्रिंक। ओके, जैसा पीते सोचते कि एनर्जी आ गई, बट इट्स नॉट ट्रू। ओके, इट इज स्पॉइलिंग योर हेल्थ, it is spoiling your health. Don't drink such stupid drink. Okay, don't drink it. Clear? Water is a good drink, very good drink. And juice, fruit juice, fruits लाके अपने घर में मम्मी को दो, जूस बना के देंगे, it's a very good and healthy one. Clear? But this aerated drinks, थम्स अप है, पेप्सी है, हेल है वगैरह, ये ड्रिंक्स वगैरह डेंजरस। ये पीने से क्या होता है, रेगुलरली पीने से क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली इफेक्ट ऑन कैल्शियम, कैल्शियम लेवल को कम कर देता। कैल्शियम लेवल को कम करने से पहले पहले पैराथ्रोमोन को इफेक्ट करता डायरेक्टली। ओके, ग्लैंड इफेक्ट हो जाता। Clear? So parathormone, if the parathormone becomes less, effect on the calcium. Calcium effect directly shows on the bone. Then the bones become soft. Steps, स्कूल के स्टेप चढ़ते चढ़ते आपको मोच आएंगे तो क्रैक हो जाता बोन। खेलते खेलते गेम्स में अगर गिर गए तो बोन्स क्रैक आ जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट बोन्स रहने की वजह से वैसा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अवॉइड दिस वन, ड्रिंक्स अवॉइड करो। कभी कभी मौके पे जब है कुछ भी ऐसा अच्छे से पार्टी है, फंक्शंस में चले गए, मैरिज में चले गए वगैरह, ओके नो प्रॉब्लम, बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ दिस ऑल बैड थिंग्स। क्योंकि ये हर चीज़ ये सब बैड थिंग्स है ना, बैड हैबिट्स है पूरे कम्प्लीट, सो उसको अवॉइड कर लेना, ठीक है। ये तो है ज़्यादा लेने का, ये चीज़ लेने की वजह से ये हो रहा है, लेकिन थोड़ा एक कंडीशन है इसके अंदर। ओके, एक तो क्या है, मोर क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी लेने से, दूसरा मोर क्वांटिटी, अगर ये ज़्यादा हो गया इन डिसीज कंडीशन में, थोड़ी डिसीज की कंडीशन में ज़्यादा हो जाता है। मोर कंडीशन, इसमें क्या होता है, एक तो लेस है, एक मोर है। इसमें क्या होता है मालूम है, पूरे मसल्स एक्टिव बन जाते, all the muscles, okay, complete muscles will become completely active। okay, active muscles, active muscles बोलते क्या सोच रहा, मसल्स अच्छे बन जाते सोच रहे, नो नॉट लाइक दैट। सी द फिंगर्स, ये हम मूवमेंट कर सक रहे, वी आर मूविंग द आवर फिंगर्स कंप्लीटली, एवरीथिंग क्लियर। बट पर्सन हु इज सफरिंग विद द हाई अमाउंट ऑफ दिस पैराथ्रोमन, ही कांट फोल्ड द फिंगर्स, ही कांट फोल्ड द फिंगर्स, इट विल बी स्टिफ हो जाता, दर्द होता, लॉट ऑफ पेन विल बी देयर, स्टिफ, एंड दैट कंडीशन, द डिसीज इज कॉल्ड एज ए टेटानी। टेटानी क्या नाम है डिसीज का, टेटानी, देखा ना। तो ये डिसीज के शिकार हो जाते अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पिएंगे। ओके, हैबिट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, डोंट मेक ए हैबिट, डोंट मेक ए हैबिट, ठीक है। वंस एन ओकेजन यू कैन ड्रिंक इट। दिस ड्रिंक्स इफेक्ट्स ऑन दिस ग्लैंड्स, these glands are very very important for human being, for the growth and development. You children are just 13 years 14 years, isn't it? Yeah, so growth and development is still going on. अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफी टाइम लगता है ना, 19 ईयर्स तक 20 ईयर्स तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी टेक प्लेस। सो अभी से पी लेंगे इतने टफ ड्रिंक्स, वेरी डेंजर ड्रिंक्स, डेफिनेटली इफेक्ट्स ऑन द बॉडी पार्ट्स, स्पेशली योर ग्लैंड्स, स्पेशली योर ग्लैंड्स हियर। सो होप यू विल नॉट फॉलो दैट वन, ठीक है। तो ज़्यादा कम क्वांटिटी से बोन सॉफ्ट हो जाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी से मसल्स पूरे एक्टिव हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, वेरी एक्टिव, स्टिफ, you can't move it, a lot of pain also will be there, and that condition is called as the tetany। this is about the parathyroid gland, clear? समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वन, women body is a very 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 important, isn't it? Very 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 important। and women body की तरह जो क्रिएट हुआ ह्यूमन बॉडी, जो गॉड बनाया ना, बहुत सोच समझ कर बनाए हुए है ना। तो जब गॉड बनाए हैं तो उन्होंने ही लेना है, अपने खुद ही से हम ऊपर नहीं जाना। समझ में आ रहा होंगे ना, एक पर्टिकुलर टाइम है सबका, सबका टाइम, मेरा टाइम, सबका टाइम, तो उससे पहले पहले नहीं जाना, उससे पहले पहले दावत नहीं देना जाने के लिए। और दावत का अरेंजमेंट क्या है, चिकन मटन नहीं है, दावत का अरेंजमेंट क्या है, थम्स अप, ड्रिंक्स, अल्कोहल, सिगरेट्स, गोवा, गुटखा, ये सारे हम अपने आप कर रहे हो। ओके, वी आर स्मोकिंग, दिस ऑल थिंग्स, ये गंदे हैबिट्स किसी को नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज द एड्रिनल ग्लैंड, adrenal gland, clear? Now what are the weight of this adrenal gland, 7 to 10 grams तक इसको बोल सकते, ठीक है ना, 7 to 10 grams, clear? कहाँ पे रहता है adrenal gland, kidney, we have a pair of kidney, okay, we have pair of kidney, so above the kidney there will be like a cap, like this, the kidney are wearing the cap, क्लियर। किडनी के ऊपर, सपोज ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक कैप की तरह रहता है,
that gland is called as the adrenal gland. Renal मतलब किडनी को अटैच, adrenal gland, किडनी को जो अटैच करा हुआ है उसको बोलेंगे adrenal gland. होप अंडरस्टूड. ठीक है, ये ऐसा अटैच करा हुआ रहता किडनी पे, ठीक है ना, यहाँ पर अटैच दोनों किडनी पे, ये पेयर ऑफ किडनी, ये पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, बोथ यहाँ, ठीक है. नेक्स्ट वन, दिस एड्रिनल ग्लैंड, इसके बाहर के हिस्से को क्या बोलेंगे, ऊपर के हिस्से को क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स. कौन सा कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स. इनसाइड एरिया इज कॉल्ड एज द एड्रिनल मेडुला. दीस आर द टू पार्ट्स. ठीक है ना, देखो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है किडनी के ऊपर, है ना, ऊपर के हिस्सा, ओके, द अपर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड एज द एड्रिनल कॉर्टेक्स. ये एड्रिनल कॉर्टेक्स. इनसाइड एरिया is called as the adrenal medulla. These are the two parts, okay, of adrenal gland here. Now both produce different hormones. This is the cortex. First is the cortex, second is the medulla. Okay. Now cortex, the parts है, okay. Now what is the work of cortex? You know, it produces two hormones. कौन से हार्मोन है, एक हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल, ठीक है, और दूसरा हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन. सॉरी, these are the two hormones, okay. Cortex, okay, upper region of the adrenal gland, which is called as the cortex. It produces how many hormones, you know, cortisol and aldosterone, two hormones. Now what is the work of cortisol, you know? Okay, in what way it is helping? It helps in metabolism. Cortisol helps in metabolism. Cortex helps in metabolism. What is metabolism के बारे में क्या बोला था अभी? What is metabolism? Okay, breaking down the complex food molecules. They are nothing but carbohydrates are there, proteins are there, fats are there. They are in the complex form. They'll broke down into simpler form, and they'll supply to each and every cell and tissues, organs of our body. That movements of this energy level particles is said to be as a metabolism. This is the work of the cortisol. Clear? Work of the cortisol, understood? It helps in, or it regulate the metabolism. Okay, it regulate the metabolism here. Okay, the next one is the aldosterone. ये next hormone है. Clear? Aldosterone functions also are there. What are the functions? It helps in reabsorption. It helps in reabsorption of water. Okay, sodium. Clear? Understood? Mainly water and sodium. Okay, and still what it will do, you know, it maintains the level. It maintains the levels of, okay, it maintains the levels, okay, of sodium. Clear? Understanding this one, you know, it maintains the level of sodium here. Okay, reabsorption of water, sodium, maintains the levels of sodium also. Clear both. And also it also helps in maintains the volume. Okay, volume of blood. This is the function of aldosterone. Clear? What is the function of aldosterone? You know, mainly it is helping in reabsorption of water, sodium. Okay, reabsorption of water and sodium. ये दोनों को क्या करता है, रीअब्जॉर्व कर लेता, एक्स्ट्रा करने नहीं रखना देता ब्लड के अंदर, ठीक है ना. और क्या काम करता है, ब्लड के वॉल्यूम को कंट्रोल करके रखता. ओके, एट टीनेज एज द ब्लड, ओके, पर्टिकुलर ग्रोथ एट द टाइम हाउ मच लीटर ऑफ ब्लड विल बी देयर इन द बॉडी, 5 लीटर्स, उसको मेंटेन करके रखता, ठीक है. और लेवल ऑफ सोडियम को मेंटेन करता, ओके, ना बढ़ने देता ना कम होने देता. ये वर्क है एल्डोस्टेरोन का. क्लियर? Cortex, adrenal cortex produce two hormones, cortisol, aldosterone. What is the work of cortisol? It helps in metabolism. What is metabolism? Breaking of carbohydrates, fats, proteins into smaller particles and supplying to each and every tissue of the body. Next, aldosterone. What is the aldosterone is doing? You know, it helping in reabsorption of water. Here. Then next other work, what it is doing? You know, it also helps in maintain the levels of sodium. Okay, maintains the levels of sodium as well as the volume of blood. Okay, blood भी वहाँ पे रखता. Then the next one, the medulla. This medulla produces the hormone called as adrenaline.
द हार्मोन नेम इज एड्रेनलिन, ओके, या इसको फाइट हार्मोन बोल सकते हो, फाइट एंड फ्लाइट, ये हार्मोन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जिसका नाम है एड्रेनलिन, ओके। करता क्या हार्मोन एड्रेनलिन, ओके, एड्रेनलिन का हार्मोन करता क्या पे, व्हेन इट इज प्रोड्यूस, कब प्रोड्यूस करता है, व्हेन द पर्सन इज इन ग्रीफ, पेन, pleasure, emotion, okay, fear, okay, at that point what happen, it is produced, okay, that means heavy लिमिट से बाहर जाने नहीं देता ये हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन जाने नहीं देता, इंसान को रोक के रखता, एक्स्ट्रा जाने नहीं देता, ठीक है। जैसा कि सपोज कोई जोक सुना दिया मैं आपको, अच्छा सा जोक सुना, आप हंसना शुरू करते, फिर एक जोक और भी हंसना शुरू करते, और एक जोक फिर हारेगा, फिर एक 50, 51, 52, सिर्फ स्माइल, हाँ भाई अच्छा है, हाँ भाई अच्छा है, दैट मीन एक्स्ट्रा ज़्यादा भी हंसेंगे, ओके, तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता, अगर ब्लड प्रेशर तेजी से और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, इट डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द डिवाइस, पंपिंग डिवाइस ऑफ आवर बॉडी, नथिंग बट हार्ट बस्ट होने के चांसेस रहते हैं एक्स्ट्रा। रोने का एग्जांपल दूंगा, एक और एक एग्जांपल अपोजिट टू लाफिंग, जोक में तो मजे कर लिए, अभी रोना है, कंडीशन किसी के घर को चले गए, किसी रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो गई, उसके घर चले गए हम, ठीक है, सारे डेफिनेटली आपको सभी रोते रहते हैं वहाँ पे, है ना, तो उस टाइम पे जाके हम हंसते थोड़ी ना, अरे कैसा लेट गया बेचारा चले गया, नहीं, तुम भी रोना शुरू हो जाते, कितनी देर रोएंगे भाई, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 आवर, 2 आवर्स, उसके बाद 2.5 आवर्स, चलो उस तभी भी रो रहे, देन 3 आवर्स, उसके बाद निकाल के लगाना पड़ता, ओके, इफ यू वांट टू क्राई आल्सो, टीयर्स विल नॉट कम, that means your body, inside your body will be exhausted, totally exhausted, and at that time this adrenaline hormone produce and stop it, okay, it controls over your body, controls that situations, वो सिचुएशन पूरा क्या खराब हो रहा, वो सिचुएशन कंट्रोल कर लेता हूँ, अभी रोने नहीं देता ज़्यादा, इट स्टॉप इट, बिकॉज एक्स्ट्रा इफ यू डू, इफ यू क्रॉस द लिमिट, एक्सटेंट्स आर देयर ईच एंड एवरीथिंग, यू कांट, ओके, एट दैट टाइम कुछ भी होने के लिए चांसेस रहते हैं, बैड थिंग्स, इजंट इट, एग्जांपल लाइक बिरयानी है, सबको ज़्यादा पसंद रहती है बिरयानी, है अपने अपने हिसाब से, जो भी फूड तुमको पसंद है, तो फूड कितना खाते, 1 प्लेट बिरयानी, और 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, उसके बाद बिरयानी कितनी भी अच्छी हो, फूड कितना भी अच्छा हो, यू कांट कंज्यूम दैम, a limit is there na, for everything a limit is there, so extend what happen here when you are in grief, fear, डर रहे, ज्यादा डर रहे, उस टाइम पे भी ये प्रोड्यूस हो जाता, डरने के एग्जांपल दूंगा आपको, जैसा कि घर में एक मूवी देख रहे हैं आप, अच्छा सा मूवी देख रहे हैं, कौन सा मूवी, हॉरर मूवी देख रहे हैं आप, घर में अकेले, इमेजिन करो आप अकेले घर में, ठीक है, बिल्कुल अकेले घर में बैठे हुए, कोई नहीं है, बड़ा सा टीवी पे क्या आप हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो हॉरर मूवी देखते वक्त ब्रेन में क्या चलता रहता है, क्या था, अरे इसके बाद क्या सीन होगा, इसके बाद क्या सीन होगा, अरे यहाँ से कुछ होगा, यहाँ से शैतान आएगा, यहाँ से कुछ होगा, यहाँ से कुछ होगा, होता क्या, सपोज सडनली करंट घुस, अभी करंट चलेगा, तब तब क्या होगा, करंट जाने के बाद हमारे पास 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, है ना, तो दोनों की कंडीशंस अलग रहती है, राइट साइड कंट्रोल द लेफ्ट साइड बॉडी पार्ट, लेफ्ट साइड कंट्रोल द राइट साइड बॉडी पार्ट, और दोनों के ट्रिक्स अलग रहते हैं, आइडियाज अलग रहते हैं, एक बोलता कि अरे भाई एकदम सडनली रूफ में से 2 पैर आ जाएंगे, एकदम पैर निकल जाएंगे, यानी फिर नीचे से कोई एकदम आपका गला पकड़ लेंगे, पीछे से कोई आके पकड़ेंगे, एकदम सडनली, एकदम कुछ भी होता। सेकंड सेमिस्फीयर क्या बोलता है कि अरे कुछ नहीं होता, तुम बहुत स्ट्रांग पर्सन है, यू आर ए डब्ल्यू पर्सनैलिटी, बहुत स्ट्रांग है, बहुत कम्प्लीट, ये सोचने के टाइम पे उसी वक्त अगर किचन रूम में प्लेट गिर गई जोर से, ताड़ आवाज आ गया, फिर सुसु हो जाएगा फिर, है ना, या तो फिर बेहोश हो जाएंगे, कुछ तो कंडीशन डेवलप होता ही होता है ना, वो फियर कंडीशन में, वो डर के कंडीशन में ये हार्मोन रिलीज होता, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता, वो कंट्रोल कर लेता, ओके, वो सिचुएशन को कंट्रोल करता, आपके बॉडी को कंट्रोल करता, एकदम एट दैट मोमेंट आवर बॉडी विल टोटली कंट्रोल देम, कंट्रोल, एग्जांपल लाइक नाइट में एक बार उड़ गए, ओके, टॉयलेट के लिए उड़ गए, कभी डर होता है ना, हवा से कोई चीज हिल गई तो आगे ही नहीं जाते, वहीं रुक जाते, फियर होना चाहिए, अब वो डरने की वजह, ज्यादा डरना नहीं, ज्यादा फियर की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना शुरू होता, जैसा फियर होता एक मैसेज सीधा जाके हाइपोथैलेमिक ग्लैंड को टच होता, अपने पास एक हार्मोन है, डायरेक्टली द impulse which is directly go and touches the hypothalamus will give the order to the adrenal gland produce the adrenaline and control the body, ऐसा काम होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, एंड दिस ऑल वर्क टेक प्लेस विद इन seconds, clear, when you are fear, when you get fear or when you are emotional, okay, पिक्चर्स देखते रहते, पिक्चर में कोई शॉट ऐसा चला, आपके your favorite actor, if they'll die something, everyone will cry and you'll also cry, the tears comes out, but that fellows are
working only for money. But here original tears are coming. तुम तो सच में रो रहे. Emotion, okay, grief, pain, मार लगा, खून जा रहा है यहाँ से, pain, ज़्यादा pain होता है, you'll cry like anything, ज़्यादा pain होता है, at that time also it is produced. So या तो fear हो, fear, grief, emotion, pleasure, okay, in this all condition, okay, the message, the impulses directly enter within a second. It will go to the brain. In the brain, where which part? Hypothalamic region, where the pituitary gland is present. So then it goes and trigger it. Then very soon it gives the order, okay, to the adrenal gland to produce the adrenaline. It produce and control over the body. ठीक है ना, समझ में आ रहा है. सो या तो डरना है या तो मारना है, इसलिए उसका नाम रखे यहाँ पे फाइट और फ्लाइट. पीछे कुत्ता भाग के आ रहा, भागेंगे, डरेंगे तो भागेंगे, नहीं डरेंगे तो पीछे उसका सामना करेंगे. दो ही कंडीशन, या तो फाइट करना है या तो भागना है. सो द एड्रेनलिन गिवन द नेम एज ए फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन. समझ में आ गया होगा. दिस अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड. क्लियर. चलो नेक्स्ट वन. डॉग का तो बेस्ट एग्जाम्पल है ना एड्रेनल ग्लैंड. डॉग अगर कहीं सामने दुख गया तो वहीं स्टॉप हो जाता है, आगे तो बढ़ते ही नहीं कोई, है ना. गुड एग्जाम्पल. व्हेन यू गेट फियर ऑफ डॉग्स और कैट्स और समथिंग लाइक दैट, है ना, सडनली व्हेन यू गेट फियर, डर गए, एकदम डर गए, तो एकदम मैसेज पहुंच जाता, एंड दैट हार्मोन इज प्रोड्यूस. व्हाट इज द हार्मोन? एड्रेनलिन. सो नाउ द नेक्स्ट इज द पैंक्रियास. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द पैंक्रियास. Clear. Pancreas, it looks like finger-like structure. Finger-like structure. या फिर ये जे शेप में बोल सकते हैं, जे शेप, लेटर जे, या इसको हॉकी स्टिक बोल सकते हैं, हॉकी स्टिक के शेप में. क्लियर है ना. हॉकी स्टिक भी ऐसी है, जे लेटर भी ऐसी है, ये भी ऐसी है. ये शेप है पैंक्रियास का. ठीक है ना. दिस पैंक्रियास हैव बोथ द सिस्टम्स. ओके, वन एक्सोक्राइन सिस्टम एंड सेकेंड एंडोक्राइन सिस्टम. ये दो भी प्रेजेंट रहते हैं उसमें, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ. That is the reason the pancreas is called as the mixed gland of the body. Mixed gland of the body. Clear? The pancreas is called as, mixed gland of the body. ठीक है ना. And the weight will be nearly 70 grams. ये इसका weight है, pancreas का weight है. ठीक है. Because the pancreas consists of both exocrine system and endocrine system, this pancreas is called as the mixed gland of the body. अब इसका फर्क बताऊंगा. एक्सोक्राइन अपने को पढ़ना नहीं है. It is about the digestive system, already we completed. Endocrine, this part here, endocrine pancreas. Now, what is present in endocrine pancreas here now? Okay, a large number of cells. ठीक है, large number. ये पूरा liquid रहता है, इसमें से liquid रहता है. वहाँ पे large number of cells ऐसा float करते रहते हैं उसमें. They'll be floating here now. और उनके अतराफ क्या है? Liquid है, water, watery substance. Okay, like that. और जिसके अतराफ पानी रहेगा उसका नाम क्या है? आइलैंड बोलते हैं. क्लियर. तो ऐसे इसका नाम भी वही रख दिया. द नेम इज गिवन एज ए आइलेट्स. ओके, इट इज कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस. लैंगरेंस. ओके, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस. लंगारोस बोलेंगे कहीं नहीं, ये लंगारोस. आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस. अच्छा सुनो, नाम अच्छा सुनो. ये लैंगरेंस है क्या? साइंटिस्ट का नाम है. इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट हु फर्स्ट स्टडीड अबाउट दिस आइलेट्स एंड टोल्ड अस. Okay, because they are floating in the liquid, in that area, all the liquid fluid will be there here, and these cells are floating like when surrounding the water is the liquid is there. So he has given name as islets. Because he investigated this whole thing here, he studied briefly about this one, he has introduced his name, islets of Langerhans. Clear. Now this islets of Langerhans consists of two cells. Islets of Langerhans consist of two important cells. These are all completely cells only, but this islets of Langerhans consist of two cells here. Okay, what are the cells here? Beta cell. The first one is called as the beta cells. Second is called alpha cells. Alpha cells. Now, what is the work of this beta cell? Beta cell produce a hormone called as insulin. Called as insulin. Clear? And alpha cells is called as the glucagon. It produces one hormone called as glucagon.
these are the two hormones, insulin and glucagon. Clear? Insulin and glucagon. Clear? Okay, insulin and glucagon. Clear? Beta cells, alpha cells, both are belong to islets of Langerhans. Islets of Langerhans are the cells which are present in endocrine pancreas. Endocrine pancreas consists of two things, exocrine, endocrine. So it is called as a mixed gland of the body. The weight of the pancreas is about 70 grams. कितना वेट है? 70 ग्राम्स. क्यों पे मिक्स्ड ग्लैंड बोल रहे हैं इसको यहाँ पे? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन सिस्टम भी चल रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम भी चल रहा है, दो भी चल रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी. नाउ एंडोक्राइन पैंक्रियास में कईयों सेल्स हैं जिसके तरफ लिक्विड है. Okay, all the cells surrounded with only liquid here. So it is called as the islets of Langerhans. Langerhans is a scientist name who first briefly studied about these islets. He told that these islets of Langerhans consist of two cells, mainly two cells, beta cells and alpha cells. Both the cells produce hormones. Both the cells produce a hormone. What is the hormone name? Insulin and glucagon. Now we'll study what is the work of insulin, what is the work of glucagon. Clear? Copy this one clearly so that you can write the points. Okay, you can frame the points. कैसे दिखता है पैंक्रियास? हॉकी स्टिक की तरह दिखता है ना, या लेटर जे की तरह, कैपिटल लेटर जे की तरह नजर आता है. ठीक है ना. नाउ क्या हार्मोन्स है पैंक्रियास के? विच हार्मोन्स? यू नो, द फर्स्ट हार्मोन इज इंसुलिन. द फर्स्ट वन इज इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन. सेकंड इज ग्लूकागन. ग्लूकागन. ठीक है. These are the two hormones. Pancreas produce two hormones. Clear? This endocrine pancreas produces. Okay, and directly you can say islet of Langerhans consists of two cells, alpha cells and beta cells. They produce this hormone. Now, what is the work of insulin? Suppose in the blood, listen carefully. This is the blood arteries. Here the blood is flowing. This is the blood. Clear? If the glucose level, okay, glucose क्या है? C6H12O6. ये formula है glucose का. ठीक है ना. Suppose if the levels of glucose increase. Suppose if the level of glucose increased in the blood here, it will be controlled by the insulin. That's the work of insulin actually. Clear? Suppose if the glucose level is increased, high level in blood, glucose is there in the blood. Clear? High level of glucose is there in the blood. Then that high amount of glucose come outside of the body through urine. Clear? Heavy amount of glucose. ज़्यादा ग्लूकोज अगर ब्लड में बढ़ गया तो ग्लूकोज कहाँ जाएंगे? अब यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा. And that disease is called as the diabetes mellitus. Okay, diabetes mellitus. ठीक है. Simply called as sugar disease. Sugar disease. Clear? ऐसा होता. Sugar disease, listen carefully. Sugar disease sugar खाने से नहीं होता, या कोई भी मीठी चीज खाने से नहीं होता. ओके, ये ब्रेन में रख लो बात. ठीक है ना. कोई भी मीठी चीज खाने से, whatever if you take the sweet dish, you will not get any sugar disease at all. You will get sugar disease if the level of glucose will be high in the blood. अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया ब्लड में, तभी वो पर्सन डिसीज से सफर होता है जिसका नाम है ग्लूकोज शुगर डिसीज, नथिंग बट डायबिटीज मिलिटस. ठीक है. सो मेनली इफ इंसुलिन इज देयर इन द बॉडी, अगर ये हार्मोन बॉडी में अच्छा सा पैदा हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इज गुड quantity, sufficient quantity, then what the insulin will do now? If the level of glucose become more here, that high level of glucose converts into glycogen. Okay, and where it's stored? You know, it's stored in liver cells. ये काम करता है इंसुलिन. क्लियर? अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा, दैट मीन्स अगर आपका पैंक्रियास हेल्थी है, इफ योर पैंक्रियास इज परफेक्टली हेल्थी है, देन इट प्रोड्यूस बोथ द हार्मोन्स परफेक्टली. अच्छे पैदावार हो जाएंगे, इंसुलिन एंड ग्लूकागन. But if the pancreas is not working properly, that means insulin quantity is less, then only this is caused. Clear? अगर इंसुलिन कम हो गया, बहुत कम हो गया, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज तो कन्वर्ट करने वाला ही कोई नहीं है, तब वो ग्लूकोज ब्लड में से कहाँ जाएंगे? फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे. वैसे डिसीज को शुगर डिसीज बोलते हैं. ठीक है ना. शुगर खाने से नहीं होता. ठीक है, इसकी वजह से होता है. लेकिन अगर परफेक्ट क्वांटिटी प्रेजेंट है, if the insulin is present in the sufficient amount in the body, then what it is doing, you know, that insulin will come, and if extra amount of glucose is there, it converts into glycogen. And store in liver cell.
The liver cells is called as the hepatocytes. The liver cell otherwise called as the hepatocytes. Clear? Second condition और एक condition यहाँ पे, ठीक है ना, ग्लूकागॉन हार्मोन यहाँ पे. Suppose in some cases थोड़ों को बच्चों को स्टूडेंट्स को ना, ये स्टूडेंट्स के लिए लेसन 10th में दिया, क्यों दिया, सेकेंडरी में दिया, 12th क्लास में क्यों दिया, क्योंकि बच्चों की आदत है खाना नहीं खाने की, नाश्ता करते नहीं, ब्रेकफास्ट, दे विल नॉट टेक ब्रेकफास्ट, दे विल नॉट हैव ब्रेकफास्ट एट ऑल, डायरेक्टली दे विल कम टू द कॉलेज एंड स्कूल. Okay, they'll not take it. Then 12:30, 1 o'clock, till 1 o'clock, they'll be like that. So inside our body needs the energy. सबसे ज़्यादा जो खाना खाना है वो सुबह ही खाना है. ओके, आफ्टरनून और इवनिंग में खाने का नहीं है, डिनर में खाना नहीं है, मॉर्निंग ही ज़्यादा खाना है, रात भर में हजम हो गया ना, कंप्लीट नाइट ड्यूरेशन, वट एवर यू आर टेकन एट डिनर टाइम, इट विल बी एग्जॉस्टेड, एब्जॉर्ब बाय द बॉडी है. सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन, okay, for the growing age. Clear? So what happened here? If the glucose quantity becomes very less, यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे हाई, यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो ये काम हो रहा. ओके, अगर ग्लूकोज लेवल पूरा गिर गया नीचे, लेस, लो हो गया, लो बीपी, ओके, ऐसा लो हो गया, कंप्लीट लो, कंप्लीट, एट दैट टाइम दिस ग्लूकागॉन हार्मोन directly what happened, it enter into liver cell. It enter into liver cell. What is there in liver cell? Glucose is there, but in the form of glycogen. समझ में आ रहा ना, glycogen. Okay, in liver cell what is there? Glucose only is there, but in the form of glycogen. So that glycogen converts into glucose again by this glucagon hormone. Again it maintains the level of the glucose in the blood, a normal level. Clear? Okay, समझ में आ गया होगा, ठीक है. Once again I'll tell you, insulin and glucagon, try to understand carefully. What is the work of insulin? If the level of glucose will be high in the blood, okay, this insulin come and control over that high level of glucose and convert that high amount of glucose into glycogen and store in the liver cell. If the glucose level is low in the blood cell, then glucagon hormone comes now. Insulin work is to convert here. Glucagon hormone here to once again it enter into liver cell. What is there in liver cell? Glucose is there, but in the form of glycogen, and that glycogen converts into glucose and once again maintain the blood glucose level normal. होना क्या है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहना है, तब जाके शुगर बीमारी नहीं होती किसी को. अगर ये बढ़ गया तो शुगर हो गया, कम हो गया तो भी हो गया, लेकिन बोथ द कंडीशन, अगर कम हो गया तो और डिसीज, अलग दूसरे डिसीज, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, मगर ये तो मालूम हो गया ना, हाउ द शुगर डिजीज कॉल्ड, डायबिटीज मेलिटस. सो दीस आर द ग्लैंड्स. Clear? These are the complete glands. Okay, till now what we studied, pituitary gland we studied, okay, and thyroid gland we studied, parathyroid gland we studied, then adrenal gland we studied, then pancreas. Remaining two other glands also are there, ovary and testes. I'll show you little bit. I'll show you about the two also. These questions will come for 6 marks or 4 marks because long answers. Clear? Next one is the next hormones जो है उसको gonads बोलते हैं, gonads. A name is given to it as a gonads. किसको बोलेंगे gonads? पहला वाला ovary है, okay, ovary. Second one testes. These two. Clear? Ovary present in females, okay, and testes present in males. Together called as gonads. क्या बोलेंगे? गोनाड्स है. क्लियर? नाउ ओवरी, ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ओवरी और टेस्टिस भी हार्मोन, जैसा पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, जैसा वो लोग हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक दैट दिस टू ग्लैंड्स आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स, अपने अपने डिफरेंट हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करते हैं. जैसा कि पहला हार्मोन है इसका, ओवरी का पहला हार्मोन को क्या बोलेंगे यहाँ पे? ईस्ट्रोजन. Estrogen. And the second hormone is called progesterone. These are the two hormones produced by the ovary. Clear? Which hormone produces, estrogen or the estrogen, you can tell, estrogen and progesterone. This produce. And their work and function, detail what happen, we'll study. Testes produce the hormone called as testosterone. Testosterone. Clear? Produced by the testes. Clear? Detail about this estrogen, estrogen, progesterone, testosterone, this everything we'll study in the next chapter. Okay, reproduction. Okay, human reproduction. In that we can study detail about this all things, in what way it works, functions, where it is produced, what happens, detail. Okay, detail about everything about this ovary and testes. Clear? This is about the endocrine glands. Hope everybody understood here now. And time to हो रहा, अभी खरे करो टाइम है मेरी तरफ से in advance. Okay, wish you happy new year for all students.
Okay, my dear friends, everybody, clear? See you soon again in next year.